good morning, good afternoon, good evening, or good night, wherever you are in the world. I greet you in the name of one and only Yeshua. Yeshua, my beloved. How much I love him, I cannot even tell in words because he died for me. He died for Eve because Eve was the one who sinned. She was the sinner, and death came through Adam. But our God came in flesh as second Adam, and he died. That flesh was put on the cross for my sin, for the sin of Eve. But then that very man who was God in flesh, who is God and who is coming, who is my Savior, he says, "Come unto me, all of you who are heavy laden, and I will give you peace." He's the Prince of Peace. He came 2000 years ago, and people say, why is there no peace when the scripture says he came to give peace? And still there are wars, and even after he died, there was World War I and World War II. What kind of peace did he bring? Well, people don't understand the scripture because understanding is so important. People run after wisdom. Solomon ran after wisdom, but he did not gain anything except the worldly riches from wisdom. But with understanding, you go to the depths of the scripture, you come to know the heart of God, and that is the place that is called Holy of Holies. That is where he abides, and that place is our heart. That is the altar which should be holy so that our God can inhabit this place, and he can use us as vessels for his glory. Not that we are something, but that we are broken vessels. And when we are washed in the blood of Jesus and kneaded in his blood again, a new vessel is created, and that vessel is then filled with the anointing of the Holy Spirit to be used for his glory. How great is Jesus! I can never thank him enough. But he's coming soon to take you, to take me. The bride is ready, and the workers are few. We are in the field. As God has chosen me, I go out in the field, and my prayer warriors, I thank you. I thank you. And today is the second day as we continue on the topic of wisdom versus understanding. And I just dwelled on the first verse of the first chapter of Proverbs yesterday. So let's continue today, and we start today's praise and worship. It's a praise and worship day, Friday, good day, sixth day of the week, the day that God made Adam and Eve, the day that we need to conquer and be victor over Satan and his army. Let's pray. Bushra, can you lead us in prayer? Yes. Heavenly Father, we come before your throne in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus, for your sacrifice. Thank you, Lord Jesus, for your love. Heavenly Father, when we were in sins, when we were sinners, you sent your Son for us. So thank you, Lord, for your great love. You are the loving Father, and we call you Abba Father, and we praise you, our Father. We praise you, our Abba. We magnify your name. We glorify your name. There is no one like you. You are yesterday, today, and forever the Oh, same God. yes. You are unchangeable, God. Oh, You are yes. enthroned on the praises of your people. Oh, yes. Thank you, Hallelujah. Lord Jesus. Your word declare where two or three are gathered in my name. You are among us, Lord, as your word declared, because we are gathered in your name, and it is impossible to please God without faith, your word Oh, declares. yes. Oh, And your yes. word says, whosoever comes in his presence, believe that he is among us. He is among us. Oh Lord Jesus, we believe and we declare that Yes. you are among us because we are gathered
gathered in your name. We are here to praise you. We are here to Oh, worship you. yes. We are Yes. here to say your name, to give glory to your name. Oh, Oh Lord yes. Jesus, we Yes, praise you. We praise you. Oh, Our yes, Lord. hearts are full of gratitude. Our heart are full of Hallelujah. thanksgiving. Oh Lord Jesus, there is no one like you. No There is one. no one like you. You are No Prince of one. Peace in this time of anxiety, in this time of depression, in this time of discouragement. You are the Prince of Peace. As you say, I have given you my peace. My peace I give unto you. Let your not your heart be troubled, neither let it be afraid. Oh Lord, your peace is not like the peace of the world. You are the peace giver. You are the Prince of Peace. And thank you, Lord Jesus, for your peace which is in our heart. Thank you, Thank Lord you. Jesus, for your joy which you gives us when you come in your presence. And thank you, Lord Jesus, as your word declare, the joy of the Lord is my Oh, strength. yes. We are strength. We have the strength. We are strong because of your joy, Lord Jesus. Yes. Thank you, Lord Jesus. We are not like the world. We are not like the world who finds their peace, their joy in the worldly things. We find our peace in you. We find our joy in you because you are the source of joy. You are the source of Prince of peace, oh Lord. Thank you, Lord Jesus, Yes. for your blood. Thank you, Yes. Lord Jesus, for your blood which Yes. has bought Oh, us. thank Oh you. Lord Jesus. Oh La Rabasiri Shiri Oh, Sataka. thank you. Oh Thank you. Thank you. Lord, oh Thank you. Rabazili Thank you. Shiri Thank you. Sataka, आपकी Thank you. ब्लड के लिए शुक्र करते हैं और Oh, शुक्र शुक्र. करते हैं खुदावंदा, शुक्र हो खुदा. जिससे हम है खुदावंदा खरीदेगा, जिससे वो दस्तावेज जो हमारे नाम पे थी वो मिट गई और हम आप में नए हो Oh, गए. The yes. old has gone, the new has Oh, come. yes. हम नए हो गए हैं खुदावंद. हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के नहीं है, बल्कि हम अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी Oh, सूरत yes. बदलते हैं, Oh, जिससे yes. आपका कलाम फरमाता है. शुक्र करते हैं Yes. जितने लोगों को आप अपनी हुजूरी में लेकर आए हैं इस परस्तिश के लिए, इस ताजीम के लिए, कि हम मिलकर आपकी परस्तिश करें, हम मिलके आपके नाम को जलाल दे, आपके नाम को ऊंचा करें. हम शुक्र अदा करते हैं इस मुकद्दस मजमा के लिए जो फराहम किया गया है. हम है प्यारे खुदा ने एसओडी फैमिली के लिए दुआ करते हैं. एक एक बंदे Oh, को, एक yes. एक घराने को है खुदा Yes, बरकत दे. Lord. अपनी लीडर के लिए, सिस्टर सबिता के लिए आपकी बरकत को मांगते हैं, आपके और रेवलेशन को मांगते हैं, ताकि कलाम को है खुदा जिस तरीके से हमें सिखाती हैं, समझाती हैं, ये ना बल्कि आपका पाक रूह आपकी बेटी में से Oh, होके yes, बोलता Lord. है और आगे भी बोलता रहे. और है खुदावंद Oh, हमारी yes. जिंदगियां तब्दील होती रहे, Yes, हम Lord. तब्दील होते रहे. खुदावंद Yes, हमें Lord. ग्लोरी टू ग्लोरी लेके जाए. है Yes, खुदावंद हमें Lord. मूव करे, हमें मूव करे Oh, yes, खुदावंद, Lord. और गहरे में ले जाए, जहां Yes, पर हम Lord. आपकी मोहब्बत की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई Oh, और लंबाई yes. को Oh, जान सके. yes. क्योंकि है Oh, खुदावंदा, yes. आपने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, Oh, ताकि जो yes. कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि Yes. हमेशा की जिंदगी पाए. आप किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हर एक की तौबत तक नौबत पहुंचे. बेशक. और आपका रूह काम कर रहा है खुदावंदा. हम शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं. दुनिया की हफरा तफरी में एक पीसफुल, एक बहुत ही खूबसूरत आवाज आपकी आती है. Yes. और है खुदावंदा, उस आवाज पर आप हमें अमल करवाते हैं. हम Oh, शुक्र thank you, करते हैं. Jesus. और जिस तरह मरियम ने कहा, हम भी कहते हैं, ओ खुदावंदा, हम आपके बंदे हैं, हमारे लिए आपके कॉल के मुआफिक हो, आपके कदमों बेशक. में आना हमारी प्रेफरेंस हो बेशक. खुदावंदा, और आपके नाम को जलाल दे. बेशक. बरकत दे पूरी प्रेज वर्शिप में, पूरी मीटिंग में हमारे साथ और हुए. पाक, यू लीड अस, यू टीच अस, Yes. यू गाइड अस. Yes. In the Yes. name of Jesus we pray. Yes. Amen. Yes. Amen and amen. There's fire. There's fire. What a fiery prayer. Glory to God. और रूह मौजूद है. कौन सा रूह? पाक रूह मौजूद है. बहुत सी रूहें हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं हमें परगंदा करने के लिए, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि उसने पाक रूह भेजा ताकि वो हमें सकूनत कर सके और हम शैतान के हर हरबे पे फतहमंद हो सकें. और एक हरबा जो बहुत खूबसूरत हरबा है, बहुत आसान है, लेकिन खतरनाक भी है, वो है परस्तिश का. क्योंकि कलाम में लिखा है 22 ज़बूर 22:3 में कि वो जब हम परस्तिश करते हैं तो उसे पसंद आता है. एंड ही इनहैबिट्स द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल. लेकिन बहुत से ऐसे परस्तार अपने आप को समझते हैं जो गुलकार हैं, क्योंकि उनकी गाने से खुदावन तख्त नशी नहीं होता. उनको बहुत ज्यादा प्रेज मजमे में मिलेगी, वाह वाह भी होएगी, तालियां भी बजेंगी और
एक चार्ज एटमॉस्फेयर भी वो क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि म्यूजिक से आप चार्ज हो जाते हैं। हॉलीवुड में देखें कितने गीतों से, कितने गानों से महफिलें चार्ज हो जाती हैं, स्टेडियम्स चार्ज हो जाते हैं। बॉलीवुड को देख लें, जो गुलकार हैं, उनके अभी लंदन में भी कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन एरिना इज फुल एंड जैम पैक्ड, और वो चार्ज एटमॉस्फेयर में होते हैं। ये एक पावर है म्यूजिक की। तो उसमें एक बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है कि हम सारी ग्लोरी अपने पे ले जाएं कि मैंने कितनी अच्छी परस्तिश की, कि मैंने खुदा को तख्तनशी कर दिया। और यही चीज थी जो शैतान में आई, क्योंकि वो क्वायर लीडर था, वो परस्तिश करता था, और वो बहुत खूबसूरत परस्तिश करवाता था। ही वॉज परफेक्ट। कलाम कहता है ही वॉज अ मॉडल ऑफ परफेक्शन, मॉडल ऑफ परफेक्शन। Till what time? Till pride entered him, and then he was cast down. So, for all worshippers, it's a very, very difficult talent, because if you get swayed by the crowd and you are moved by the crowd and you think, I am doing this, then that worshipper is no longer a worshipper. He becomes a singer, and that means he is party to the devil. That's a very difficult place to stand. But I praise God for the worshippers who are in Stars of David, that God holds their heart with his hands, so that when they praise and worship and then enthrone God on their praises, Satan cannot move them and pride cannot enter their hearts. And as they fervently pray, as they fervently worship our Abba Father and thank Jesus for his sacrifice, they say, not me, but you, Jesus. And they speak Jesus with their heart. And then they see miracles. And together we will say, it's not me, it's not I, it is you, Jesus. Hallelujah. Let's start our praise of today. And Shoaib from Quetta, the lead worshipper in Quetta, will be leading us today. And let's connect our hearts as we are connected. Let's connect with the Holy Spirit. Be one. And let Satan see that we are united, not in the flesh, but in the spirit. And he cannot come against us. And if he does, then God is taking care of his chosen ones. Hallelujah. Thank you, Shoaib. Hallelujah. Praise the Lord. दाऊन की तारीफ हो. All glory to God. Amen. हम आज की प्रस्तुति का स्टार्ट करते हैं ज़बूर 122. मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे. मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे. मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए. के आओ यहोवा दे घर चलिए. मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे. मैं खुश होया जद मैं आखन लगे. यरूशलम तू खुदावंदा शहर. यरूशलम तू खुदावंदा शहर. तेरे बूया विच हुन खड़े साडे पैर. तेरे बूया विच हुन खड़े साडे पैर. मैं खुश होया जद मैं आखन लगे. यरूशलम तू अजायब बनी. यरूशलम तू अजायब बनी. तेरी सारी बातों है दादी घनी. तेरी सारी बातों है दादी घनी. मैं खुश होया जद मैं आखन लगे.
ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां गवाही दिखात है चढ़ जांदियां, गवाही दिखात है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जद मैं आखन लगे के तां इसराइल दे शाह बनन, के तां इसराइल दे शाहिद बनन। यहोवा दे नाम दी सताइश करन, यहोवा दे नाम दी सताइश करन। मैं खुश होया जद मैं आखन लगे के उस विच धरे हैं अदालत था, के उस विच धरे हैं अदालत था। के दाऊद सब घराने देखा, के दाऊद सब घराने देखा। मैं खुश होया जद मैं आखन लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैं आखन लगे। शुक्र खुदावंद का। हालेलुया, हालेलुया। हम खुशी से खुदावन के घर जाने की बात करते हैं। जबूर नवीस कहता है मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। यहोवा का घर कौन सा घर है? चर्च घर है, ऑफ कोर्स। लेकिन चर्च तो हम संडे के संडे जाते हैं, तो बाकी 6 दिन यहोवा के घर हम नहीं जाएंगे तो फिर हम कहां से बरकत पाएंगे? तो उसका घर, पहला घर ये है हमारा दिल। वो यहाँ सकूनत करना चाहता है और वो चाहता है कि 24 घंटे वो हम उसके घर में रहें। और हम उसके घर में कैसे रह सकते हैं? जब हमारा दिल पाक होता है। परस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हम खुदावन की तारीफ करते रहेंगे, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। खुदावन की तारीफ में आगे बढ़ते हैं और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। जबूर गाएंगे, जबूर 126। कैदी सहे हूँ। कैदी सयोनी यहोवा ने ले आंदे जो छुड़ा, कैदी सयोनी यहोवा ने ले आंदे जो छुड़ा। दसाड़ा हाल सी जिਵੇਂ सुपना कोई देखदा, दसाड़ा हाल सी जिਵੇਂ सुपना कोई देखदा। मुँह सादे भर गए आसे तेरा गाना तक, मुँह सादे भर गए आसे तेरा गाना तक। पैर कौमारी चर्चा सी के ओ नादा खुदा, पैर कौमा बीच चर्चा सी के ओ नादा खुदा। पर्दा है ओ ना देव से बड़िया मेहरबानियां, पर्दा है ओ ना देव से बड़िया मेहरबानियां। मेहरबान यहोवा खुश इसको सदा, मेहरबान सदा यहोवा खुश
हसीए सो सदा तू हंसावे के दिसारे दूसरी लहरा दिबांग तू हंसावे के दिसारे दुखनी लहरा दिबांग अपनी रहमत नाल यारा छुड़ा के घर ले आ अपनी रहमत नाल यारबा छुड़ा के घर ले आ अंजुआ दे नाल रो रो के जो भी है बीज दे अंजुमा दे नाल रो रो के जो भी है बीज दे बस वदन गे खुशी दे नाल जागा के सदा बस वदन गे खुशी दे नाल जागा के सदा इजदा चुक के जखीरा रोंदा होया जादा है इजदा चुक के जखीरा रोंदा होया जादा है पर खुशी दे नाल बेशक भरिया चुक के आवेगा पर खुशी दे नाल बेशक भरिया चुक के आवेगा कैदी से होनी यहोवा ने ले आदे जग छुड़ा सद साड़ा हाल सी जिਵੇਂ सुपना कोई खुदा हालेलुया, Praise हालेलुया। सब the Lord. हालेलुया का जरा नारा तो लगाएं। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Can I have a hallelujah from everyone? इस वक्त अपने लबों को ना Hallelujah. रोके। Hallelujah. 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 Yes, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. God wants us to open our lips to say Yes. it. क्योंकि हम कहीं हम में से शाय होते हैं। मैं बहुत शाय थी। मैं समझ सकती हूँ कि हम जब शाय होते हैं तो हम लोगों के सामने आना नहीं चाहते, हम बोलना नहीं चाहते। लेकिन दलेरी आप में दलेरी आएगी जब पाक रूह आप में आएगा, क्योंकि कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें दलेरी की रूह बख्शी। दिलेरी की रूह जब आप में आती है तो फिर आपकी सारी जो शाइनेस है वो चली जाती है, जैसे कि मेरी शाइनेस चली गई और अब मैं दिलेरी के साथ जो है वो खुदावन की तारीफ करती हूँ और मेरी जुबान रुकती नहीं, क्योंकि उसने मुझे वो शादमानी दी जो दुनिया में कोई चीज नहीं दे सकती, कोई चीज नहीं दे सकती। और ये जो 2 जबूर गाए गए, बहुत ही खूबसूरत ज़बूर, सारे ज़बूर खूबसूरत हैं, लेकिन ये बिल्कुल इस वक़्त रूह की हिदायत से, बिकॉज़ ये शेकी ने खुद चुने थे। मैंने कहा था जो आपको रूह गाइड करे, क्योंकि मैं सब गाइड नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ मेरे में रूह नहीं काम करता, आप में भी काम करता है। लेकिन जब मुझे कोई मैसेज मिलता है तो डेफ़िनेटली मैं कहती हूँ नहीं, ये आपको फ़ॉलो करना है। तो ये जो 2 गीत जो 2 ज़बूर गाए गए, इनका मेन जो मकसद है वो क्या है? वो व्हाट इट डज़ इट रिवॉल्व अराउंड? इट रिवॉल्व्स अराउंड जॉय। और मेरे हाथ में इस वक्त इंग्लिश बाइबल है, तो साम जो पहले गाया गया उसमें उसका जो हेडिंग दी गई हुई है वो है द जॉय ऑफ गोइंग टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। तो हम खुशी खुशी नहीं जाते, हमें शादमानी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि खुशी क्या होती है? आज हम खुश है, कल उदास है। शादमानी ऐसी है कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं, जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, आप अंदर से सुकून में हैं। आपकी बोट जो है वो हिला रहा है शैतान, वो हिल रही है, तूफानों में हिल रही है, लेकिन आप कह रहे हैं यस्सु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरना मैनू बस कहंदा है, मैं क्यों डरा। फिर आप जब गाएंगे
तो फिर शैतान थक हार के उसको जाना ही होगा, क्योंकि परस्तिश जब आप करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, उसके लिए वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आया है डराने के लिए, हलाकान करने के लिए, मारने के लिए, आपकी खुशी मारने के लिए, आपकी शादमानी मारने के लिए। लेकिन यीशु आया हमें खुशी देने के लिए, शादमान करने के लिए, दिलों को शादमान। और वो जल्द आ रहा है। और कहाँ आ रहा है आपको पता है? आपको पता है ये जो जिक्र दूसरे अभी शाम जो गाया गया है 126, इसकी हेडिंग है अ जॉयफुल रिटर्न टू जायन। जायन जो है वो जेरूसलम के लिए कहा गया है। और कलाम अगर आप जानते हैं और पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि यीशु की आमद कहाँ होगी। और खुदावन के फजल से मुझे वो ये मैं कहूंगी एक गिफ्ट मुझे मिला कि आई हैव विजिटेड दैट प्लेस इन 2022 ऑन माय बर्थडे। जिस पहाड़ पे यस्सु ने आना है, वो वही पहाड़ है जिससे उसे देखा गया था ऊपर जाते हुए, और उसने उसी पे वापस आना है। एंड दैट इज द माउंट ऑफ ऑलिव्स। जैतून बहुत ही खास अहमियत रखता है कलाम में, और हम शादमानी के साथ उसके लिए उसके आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसका जाना आना जल्द है। ये हम तैयार हो रहे हैं। ये हम हर जगह पे कलीसिया खुदावन तैयार कर रहा है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में गीत गाए जा रहे हैं, क्योंकि यीशु को सब लैंग्वेज समझ आती है। उससे कुछ भी छुपा नहीं, क्योंकि वो खुदा है। वो कल का हाल जानता था और आज भी जानता है, और वो जल्द आ रहा है। तो हम उसकी तारीफ करेंगे और परस्तिश में हम आगे बढ़ेंगे शादमानी के साथ। खुदावन का शुक्र। तो खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं, परस्तिश में आगे बढ़ते हैं। एक और जबूर गाएंगे, जबूर 118 सदा तीकर है। ये कुछ जबूर ऐसे हैं, ये हमारे लिए जिनको समझ आते ही एंथम्स हैं हमारे, मैं कहता हूँ इनको। कुछ जबूर ऐसे हैं जो हमारे लिए एंथम्स बन चुके हैं, तो ये भी उनमें से एक है, सदा तीकर है। बच्चे को भी आता है। बिल्कुल सही। सदा तीकर है रहमत सारे रब दी। सदा तीकर है रहमत सारे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी। करो रब दी शुक्र गुजारी। नेकी निकली है उसको सारी। नेकी निकली है उसको सारी। सदा तीकर है रहमत साले रब ही। सदा तीकर है रहमत साले रब दी। काश इसराई ने बोले। काश आशीष इसराई ने ये बोले। बोले, ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ। ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ। ਸਦਾ तीकर है रहमत सारे रब दी। सदा तीकर है रहमत सारे रब दी। हारून दे घर दे सारे। हारून दे ते घर घर दे दे सारे। सारे काशा घण मार मार के नारे। किनारे, काशा घण मार के नारे। किनारे, सदा तीकर है रहमत रहमत सारे सारे रब रब दी। दी। सदा सदा तीकर तीकर है रहमत सारे रब दी। काशा खड़ हो हमेशा। काशा खड़ हो हमेशा। जो रख दे खौफ यहोवा यहोवा से।
रख दे खौफ यहोवा सदा चीज कर है रहमत रहमत साड़ी साढ़े रब दी रबती सदा सदा चीज कर है करे रहमत रहमत साड़ी। साढ़े रब दी। बेशक वो रहीम खुदावंद है और वो किसी की Praise the Lord. हलाकत नहीं चाहता, इसलिए उसने अपनी जान दे के हमें खरीद लिया, क्योंकि हम पाकीज़ा हो ही नहीं पाते। इस जिस्म में रह के हम पाकीज़ा हो ही नहीं पाते। हम रोज गुनाह करते हैं, हम रोज गलती करते हैं, हम कोई ना कोई गुनाह कर देते हैं। खुदावंद हमें माफी मांगने पे माफ करता है। हम धुल जाते हैं उसके खून से और अगले दिन हम फिर किसी और गुनाह में पड़ जाते हैं। कल मैं सिखा रही थी कि सिंपली दुआ ना करना गुनाह है। कितने क्रिश्चियंस हैं जो गुनहगार हैं, जो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और वो समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और हम चर्च जाते हैं और हम किसी को हेल्प भी करते हैं और हम ये काम भी कर रहे हैं, हम चैरिटी भी कर रहे हैं, हम हर काम कर रहे हैं। लेकिन वो हफ्ते में शायद 1 या 2 दिन दुआ कर रहे हैं। तो वो अगर 2 दिन दुआ कर रहे हैं तो 5 दिन गुनाह कर रहे हैं। तो फिर उनकी नेकी किस काम की जब वो एक गुनाह रोज कर रहे हैं? क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उससे रोज बात करें और हमारी दुआएं सेल्फिश दुआएं ना रह जाएं। हमारी दुआएं उसके लिए हम अपना दिल उंडेलें और हमारे दिल में जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको पता है। लेकिन हम रोज अगर अपना प्रॉब्लम्स का पेंडोरा बॉक्स खोल के रखें और हम कहें हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारी जिंदगी में ये नहीं है, ये मसला ये ठीक कर दे, ये मसला ठीक कर दे, ये मसला ठीक कर दे, तो फिर हम किसी दुकानदार के पास आए हैं चीज खरीदने के लिए और हम खरीद के जब चले जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं दुकानदार को। खुदावन चाहता है एक रिलेशनशिप कायम करना। और रिलेशनशिप कैसी? दोस्त जैसी। जब हम दोस्त से मिलते हैं तो फिर हम उसका हाल अहवाल पूछते हैं, वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, उसने अपनी आज क्या किया, क्या पहना, क्या खाया। फीमेल्स की अपनी गुफ्तगू है, मेल्स की अपनी गुफ्तगू है। लेकिन एक चीज जो कमी आ जाती है वो ये कि कई दफा मेल्स फीमेल्स को समझ नहीं पाते और कई दफा फीमेल्स मेल्स को समझ नहीं पाती। और ये प्रॉब्लम आदम और हवा से शुरू हुआ, लेकिन ये यीशु पे आके खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके फजल से हम क्या हो जाता है, लिखा है कि जब हम उसको अपना लेते हैं और पाक रूह हम में आ जाता है तो फिर कोई ना आदमी ना औरत, ना कोई ज्यू ना जेंटाइल, हम सब एक हो जाते हैं यीशु में। जैसे कि हम अब एक हैं और हम परस्तिश में एक होके आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। 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 खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। बेशक बेशक वो भला है। परस्तिश में आगे बढ़ते हैं और एक गीत है अर्नेस्ट मल का, तू जो छू जाए। Oh, ब्यूटीफुल। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट और इसके अल्फाजों को आप बड़े गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ये आपको बताता है कि दुनिया में सब चीजें आर्जी है और किसी पे हमें तवक्कल नहीं करना चाहिए। तवक्कल आपका हमेशा खुदावंद पे होना चाहिए। आप प्यार करें अपने रिश्तेदारों से, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे माँ बाप अपने फ्रेंड्स जो भी है, दिलो जान से उनसे प्यार करें। लेकिन उनसे बढ़ के आप यस्सु से प्यार करें, क्योंकि ये कलाम कहता है, मैं नहीं कहती, कलाम कहता है। क्योंकि उसने कहा है कि अगर तुम किसी और को ज्यादा जानोगे मुझसे तो फिर तुम मेरे हकदार नहीं। और अगर हम यस्सु से बढ़ के किसी को चाहेंगे तो यस्सु क्या हमारी तरफदारी करेगा बाप के आगे? क्योंकि उसने तो जान दी हमारे लिए और वो गुनहगार नहीं था। तो अगर हम उसको पीछे बैठ के बिठा दें और अपने घर में कहीं पीछे जगह दे दें अपने दिल में, और वो उसको हम अपने थ्रोन पे बैठने ना दें, तो फिर तो वो उधर सो जाएगा। वो कहेगा ठीक है मैं सो रहा हूं क्योंकि तुम मुझे काम नहीं करने दे रहे। लेकिन जब तूफान आता है तो फिर हम यस्सु को पुकारते हैं, यस्सु हमारी मदद कर। और फिर उसी तरह से जैसे वो किश्ती में सो रहा था और लोग इसका मस्खरा करते हैं कि तुम्हारा खुदा सो रहा था,
वो जिस्म में सो रहा था, लेकिन उसको सब कुछ पता था, वो इत्मीनान में था, क्योंकि उसके तूफान भी ताबे है। वो कहता है थम जा, और तूफान थम जाता है। इसी तरह हम भी ये सब कर सकते हैं, बशर्ते एक ये कि हम उस रूह में आगे बढ़े और उसका हाथ थाम लें और कहें यस्सु नाम सबसे ऊंचा नाम, सबसे आला नाम। और वो जब छू जाता है तो हमारी रूह रूह में तब्दीली आनी चाहिए, और अगर नहीं आई तो फिर हम में कोई प्रॉब्लम है, कलाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आगे यस्सु की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत गीत बेशक से। बेशक, प्रेज द लॉर्ड। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु यीशु। तू जो छू छू जाए जाए इस मट्टी को, मिट्टी को, ये ये मट्टी मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू छू जाए जाए इस मट्टी को, ये ये मट्टी मट्टी कुंदन हो जाए। जाए। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान चट्टान पे पे हो हो आके। आके तूफानों की की हंसती हस्ती है है क्या, क्या, जब जब जिंदा जिंदा चट्टान चट्टान पे पे हो हो आके। आके। तूफानों तूफानों की की हंसती हस्ती है है क्या, क्या, जब जब जिंदा जिंदा चट्टान चट्टान पे पे हो आके। अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, व्यवस्था हर डाली डाली सावन हो जाए। अंगूर दूर के के पेड़ से पेड़ से पैवस्ता, पेवस्ता हर डाली डाली सावन सावन हो हो जाए। जाए। कुम्हार तुम्हार बने, बने कुम्हार बने जिस जिस बर्तन बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो हो जाए। जाए। यीशु, यीशु यीशु, यीशु यीशु, यीशु। यीशु तेरे लफ्ज़ जिगर ने पाक खुदा, वक्त इंसान इंसान बदल बदल डाला। Oh yes, डाला। Lord. तेरे लफ्ज़ जिगर जिगर ने पाक पाक खुदा, खुदा, वक्त वक्त इंसान इंसान बदल बदल डाला। तेरे तेरे लफ्ज़ लफ्ज़ जिगर जिगर ने के पाक खुदा, वक्त इंसान बदल डाला। ईमान जो लाए जलाए यीशु यीशु पर, पर अंबर की की धड़कन हो धड़कन हो जाए। जाए।
ईमान जो लाए यीशु पर हम पर धड़कन हो जाए। तुम्हार बने तुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 दुनिया छोड़े छोड़े साथी मिट्टी का Oh, खिलौना yes. इंसान। मिट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी मिट्टी का खिलौना खिलौना है इंसान। दुनिया दुनिया छोड़े छोड़े साथी मिट्टी मिट्टी का का खिलौना। खिलौना है इंसान। तेरे हाथ में हाथ हो यीशु का वो मौत भी जीवन हो जाए। अगर तेरे हाथ हाथ में में हाथ हो हो यीशु यीशु का का वो वो मौत मौत भी भी जीवन जीवन हो हो जाए। जाए। तुम हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन बर्तन का का वो वो बर्तन बर्तन दर्पण दर्पण हो हो जाए। यीशु यीशु। यीशु Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, sweet Holy Spirit. You're here. You're in Quetta, in Kashmir, in Karachi, in Hyderabad, in London. You're here everywhere. You're present in every nation. You're present. But you're waiting to work from within. From within the people who are called by the name of Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name. Yeshua, my beloved, who died for my sin. Thank you, Jesus. I can never thank you enough for what you did for me. Everything starts from me. And when I look at you and when I read the word, it's a mirror. And the mirror tells me to clean myself first. Let me not judge anyone unless and until I have washed myself of that sin. And enable me to use the double-edged sword of the Spirit against Satan and his forces, because man is innocent. Women are innocent. Satan uses them for his kingdom, for his glory. And I come against all the forces of darkness in the name of Yeshua, the name above all names. You have no authority over any person who's called by the name of Christ. And when you are torturing, when you are tormenting those who
who are called by the name of Jesus, I come against you with the sword of the Spirit. I'm wearing the full armor of God, and you cannot torture his people anymore because I stand up in faith. And that is one thing that pleases God. Hallelujah. Let us not cry for things that we want. Let us cry for how much God loves us, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish. I might die, I might not die, but I am delighted that I know where I'm going. And so are you. You are coming with me because you have been bought by the blood of Jesus. And these are tears of joy because my heart is full of joy of what Jesus did for me, for you. He paid the penalty of the sin of Eve. He paid the penalty of Adam, through whom death entered. And these are exact words written. It's not I am creating these words. It is written that sin entered through Eve and death entered through Adam. And he came to demolish sin, to demolish death, so that we could go and commune with the Father. And he came to wash our hearts. And we are here together because this is a proof that our hearts are washed and we are one in the Spirit. And together, when we wage this war, no satanic force, no demon, no evil spirit can stand against us. And if it's working in your house, wherever it has come from, there can be legions. I come against legions because I have authority in the name of Jesus. And at my command, Satan flees. I'm not saying that. I'm not boasting. I have seen him flee. I have seen demons flee. I have seen people being delivered. And this is happening. Satan, I'm coming wherever you go. I'm following you because I'm following Jesus. And that is my shield. And he protects me against any fiery darts that you throw, because the war that we wage is not against this world. This war is against the principalities, against the dark forces upon high, and they can travel around the world in a split of a second, because spirits do not have mass that they need to travel. They need to take a plane and go. They can travel in an instant. Right now I'm talking. The spirits are listening because I'm talking. They don't know what is in my heart, but I want to show my heart to them. There's Jesus inside. Want to have a look? If Jesus is inside your heart, you can win any war. Know that he's more powerful because he was in the flesh, and he conquered Satan in the flesh. 3 times he was tempted and he used the word. And what happened? We read in the scripture what happened. Then Satan left him. He left him. So if you argue with anybody, Satan will continue to argue. He loves arguing spirit. He's a deceiver. Let us not argue. Let us understand the other person. And this is what is all about, understanding. So let's declare. Let's declare today's verse. Today's verse, let's declare. You know where it is. Whoever can open their Bibles, open it to Proverbs, and we will declare one by one. Today's declaration has been taken from Proverbs chapter 14, verse 29. Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Amen. 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 Amen.
आपके पास बाइबल्स हैं तो बाइबल में उर्दू में पढ़ लें, नहीं है तो आप अपने ये आप ग्रुप में हैं, you can go to the group, there's this verse in Urdu and in English. I've made life easier for you. अब मैं जो है वर्सेस जब डाल रही हूँ वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में डाल रही हूँ, ताकि जो भी आपको आसान लगे वो आप पढ़ सके। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू, जरूर पढ़ें, अपने लब खोलें और पढ़ें। There's power in the word. Do not be shy. God has given us the spirit of fear? No. The scripture says he has not given us the spirit of fear. He has given us the spirit of power, of sound mind, and of love. So let's declare. अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं पे ऐसी जगह बैठे कि आप बोल नहीं सकते, आप टेक्स्ट में आमीन लिख दें. But do something. Act with hands or with mouth. Act it out, please. Hallelujah. 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 Thank you, Father, for this wonderful word. Yes, yes, please say it, say it, say नाम का it. शुक्र हो। उर्दू में हम तलावत सुनते हैं प्रोवर्ब्स की इंसाल 14 बाब 29 आयत। जो शख्स सब्र वाला होता है वो बड़ी फहम रखता है, लेकिन जो शख्स जल्द गुस्सा करता है वो बेवकूफ़ी का मुजाहिरा करता है। आमीन। Amen, Amen. Marina, Serena, please पढ़े, नहीं तो अगर आप भी आपको और टाइम चाहिए, just write amen or say amen. Do something, do something. Amen, amen. Do something. I see an amen. Glory to God. I pray that God grants you more boldness so that you can say it. Oh, you can open your lips and in front of people, in front of a crowd of thousands of millions, you boldly declare the word, because when we declare, Satan flees, Satan flees, and he binds us because he scares us. I was scared, I was shy to talk in front of people, but now I'm not, because God has given me the boldness. So I will boldly declare Proverbs 14, and it's all about patience, and patience is so important. So it's 14:29. Whoever is patient has great understanding. Great understanding. Imagine, it doesn't say has understanding. Great understanding. But the one who is quick-tempered displays folly. उसको बेवकूफ कहा गया है। कौन? जो कि क्विक टेम्पर्ड है, जो कि जल्द गुस्सा कर जाता है। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है समझने की, क्योंकि जैसे कि मिनिस्ट्री में हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ लोग मुझसे कांटेक्ट में होते हैं और मैं उनको समझाती हूँ, सिखाती हूँ, लेकिन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नेचर कैरी करते हैं। कोई बड़े प्यार से सीखता है, उसको प्यार से सिखाओ तो वो सीख जाता है। कोई प्यार से नहीं समझता, उसको थोड़ा सा जरा सख्ती से सिखाना पड़ता है। कईयों को जब मैंने सख्ती से सिखाया तो उन्होंने कहा आगे से मुझे, आप में तो पेशेंस ही नहीं है। अब अगर एक गुनाह वो रोज कर रहे हैं और 2-3 महीने से रोज ही वही गुनाह कर रहे हैं, और किसी खास की मैं भी बात कर रही हूँ जो कि 15 महीने हो गए एक ही बात में बोल रही हूँ और वो नहीं अगर हो रही है, और अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो आगे से कहा जा रहा है कि आप मिनिस्ट्री चलाते हैं और आप में पेशेंस नहीं है। Okay, I will not tell you to do what is right if you think that not that correcting you is being angry, is being angry and not being patient. But then fight on your own with Satan. Fight on your own, and I'll see if you can win your war. Because I have encountered Satan himself, Lucifer himself, and I have won. That is why I am wait patiently. And if 15 months for somebody is not a long time, then that person keep on waiting, and make God wait as well. But I'm telling you, there's his patience is over, almost, not completely, because we're in the grace period and Jesus coming soon. And
And all those who will not take the first flight is rapture. And who's going in rapture? The people who are dead in Christ, they will rise first. So I'm ready to meet my parents, my sister, my brother, because they slept in the Lord. And those who are alive, if I die, then I will be the first one in that first flight. But if I'm alive, then of course, this body will be transformed, and gravity will not have its effect on me. But then there's a second flight for all those who kept saying, oh, I can meet Jesus tomorrow. Today I have a lot of work. I'm too busy. I don't have time to pray. I don't have time for fellowship. You leave me in peace. I don't want any interruption. I don't want to hear you. I don't want anything to do with you, and I'm blocking you. If that person doesn't come to his or her senses and understands that it is for his or her own benefit, then that person will be left behind. And that includes me, because every day is a test, and we have to pass that test every single day of our life. If we are not passing the test every single day of our life, we are failing. We are failing. And when we fail, then Satan is after us to capture us. And he has an army. He has legions. But thank God for there are legions of angels that God can send, because Jesus could have asked legions to come down and take him off the cross. He said, because he was in command and angels obeyed him, they still obey him. But he did not say, because he was following the will of God, his Father, your Father, my Father. He was being obedient to his will, and he knew his will is that I should die, even though I have not committed sin in the flesh. But I have to bear this pain for the sin of Eve and Adam, so that they can give life, they can get life. This calls for understanding. Understanding that sometimes when we are harsh for the benefit of the other person. A mother sometimes slaps the child. In Pakistan, it's not it's not a sin. It's not against the law. In UK, it's against the law. But in Pakistan, you can beat the child as well. But they're doing it for the benefit of the child, not that they want to kill the child or they are fed up with the child. It's for the correction, because even the scripture says in Proverbs कि अपने बच्चे को छड़ी से ना छड़ी उस पे इस्तेमाल करने से ना रोक उस we do not hesitate to use the rod. That doesn't mean you use the rod as in the actual rod, but just that means you need to correct the child. So we need to correct people in line with the word. Some of them, I will just dwell on this verse today, and we've already into 1 hour, and I will not take more time. So we'll continue with the first chapter of Proverbs, and I just touched on the first verse yesterday, and I wanted others to reflect on it today. But as I requested Bushra, but we will do that perhaps tomorrow. But I'm just going with the flow of the Spirit, and I'm guided now to dwell on this topic of anger. What is anger? What is being ill-tempered, like we've just short-tempered means? Some people think that I'm right, and if somebody is getting angry, then that person is wrong. But there are two types of anger. One type of anger is you know that something is wrong and you're trying to correct that person, and that person is not listening, and you're doing it again and again and again and again, and now your patience is now full. So for me, my patience was full after 15 months. And so I got angry. But my anger was not accepted. And I was told that you don't have patience.
Well, of course, I'm not as patient as Jesus. I'm still learning. I've not gotten to the height of Jesus where they were spitting at him, rebuking him, making fun of him, tearing his clothes. And he said, Father, forgive them. I'm not at that level of patience because he was God and I'm a human being and I'm trying to be like him. But that only means that everyone is supposed to be like Jesus. So those who close the doors that we cannot reach them because I'm in peace and you're disturbing my peace. So we put a do not disturb sign on our heart. And then it's very easy these days that if you don't like someone to tell you something, and if you're not comfortable with the conversation, you block the person. But then you're blocking your own blessing because I'm trying to correct you so that you can receive your blessing. But in reality, this is the reality. But what is happening? That Satan is now working on their mind so that that person cannot have fellowship with people who are following the word, and the Holy Spirit is working in their life. He will work in their mind to block such people, and then he will work more, he can work more efficiently in the other person's life. So this is one kind of anger, and this is the kind of anger that Jesus portrayed. Jesus was very patient, but what happened when he saw people sitting in the temple and selling things? He toppled them. He was angry. He toppled their goods and everything. And this is what is happening in UK. Churches have become marketplace. We went to Edinburgh, and there were churches because people don't come. So it's a big church, beautiful, maintenance uski chahiye. So what they do is they have turned it into a marketplace. वहां पे shopping होती है. Latest kapde, latest whatever. And there are some churches who have turned into pubs. कहीं से तो पैसा जनरेट करें बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए. दिस इज विजडम ऑफ द वर्ल्ड. बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो कहीं से तो पैसा जनरेट हो. These are robbers. They are robbing God, and they will pay. They will pay. I am praying for them, but I'm praying for the souls. I'm not praying that they should not be punished. The scripture says every sinner will be punished. So there are two kinds of punishments. One in the body here, whatever sin you do, if you do not turn from your ways, you will be paid in the flesh. And the second is your soul will be lost eternally. So I'm praying for souls. I'm not responsible for the bodies of people. God didn't tell us, you take this body and you pray for the body. Yes, I'm responsible for bodies. Who? My husband, or if my children were with me, I'm responsible for them, their bodies, that I should make my husband eat well. Everything that I do for my husband, I'm available for him. So these are the bodies that we are responsible for. We are responsible for our parents. For that matter, the daughter is not responsible for the parent. The husband is responsible for the parent, because she now has a head after marriage, and her head is the husband. And husband is responsible for the parents. She is only responsible for the husband after marriage and for her children. But if she takes care of the parents, that's an added award that she gets. So understanding the other person is so much important. Like I've just shared with you an experience of how we fail to understand someone's anger. Like Jesus was angry. So I get angry now when people are not following what I'm telling them for not 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 1 week, 2 week, for 15 months, I'm telling the same thing, but it's not happening. And I'm hurt because I know Satan is working. I know, because
my eyes are opened, I can see demons. I can see demons in different places, in Pakistan or in Canada or wherever God desires. It's not that when I want to, I can see. No, whenever God desires. So that kind of anger is justified. It is justified because that's a biblical anger. But what anger is not justified? When you judge unrighteously, not in line with the word. For example, somebody asks you to come to their place and you're busy and you don't go, and that person stops talking to you. That's not justified. That anger is not justified because you were busy and you couldn't go. So that meeting was just a chit chat meeting. हाँ गपशप कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं. So if you didn't go because of your worldly commitments and your job or whatever, and you didn't go, and now that your friend or brother or sister was angry, so that's okay. That's okay. No, that's not okay. Or is that okay? Let that person be angry. Why should that person get angry when this was not something which is according to the word? So that person is getting angry, so he or she is sinning. Now this is anger is not justified. If that person stops talking, then that person is now sinning, because the scripture says that before the sun goes down, make sure that you're at peace with your brother. And who's the brother? It just talks brother, but what about sister? Well, basically, we all become who? The sons of God when we come into the kingdom of heaven, when we accept Christ. So that means we are all brothers. Like I'm a brother to Serena, I'm a brother to Marina, to Bushrat, and to Shoaib. Because we are now brothers, and because we become sons of God, and we inherit the throne, and we become heirs to the throne of God. And who is the first one on the throne? Jesus. So we are brothers, and that is biblical. That anger is not justified because that is not biblical. So there's an anger that is justified by the word, and there's an anger which is not justified by the word. And in today's verse, we saw that whoever gets angry and is not patient, now patience is relative. For somebody, 1 month is enough and I can't bear it. I cannot tolerate. For example, marriages I've seen broken after 1 month. They cannot tolerate each other. And they were head over heels in love. And now they part their ways. They cannot tolerate it. Their cup of patience ran over after a month. So that is absolutely uncalled for, because marriage is a covenant. And covenant means through thick or thin, you stay with your husband, your wife, whoever is in trouble. You don't leave that person alone and you run away for a better life, to get pleasure, to be happy with somebody else, because that person, your husband or your wife, is not giving you pleasure. And I'm not talking about sexual pleasure. I'm talking about giving pleasure of heart. This is what is all about. When husband and wife, the physical contact is secondary. God wants us to love the husband loves the wife, and the wife loves the husband, and they do things so that they get peace of the heart. Otherwise, the body, there are so many bodies, anybody can go and have pleasure of the body. So the pleasure of the body is not in marriage, in the sense that that is secondary. There are other more important things: commitments, keeping your word, honoring your husband, honoring your wife, trusting your husband, respecting your husband, respecting your wife. These are the foundations of marriage. And if you cannot tolerate, and if you decide to leave, then you are absolutely an impatient person, because you cannot tolerate. Because we can pray for our husband or our wife, and they will be transformed. I have seen marriages transform when people have when a woman has prayed for the husband, or the husband has prayed for the wife.
fasted and prayed, and they have transformed. But when people are impatient, they leave their husband or they leave their wife and they go and marry. And then what happens? Their second marriage fails as well. And then the second marriage, they couldn't pray for the husband or the wife, and that fails. And then they go and marry again. And I know of pastors who are doing this. I've recently shared a video yesterday, and it's wonderful, because now it is now being voiced in Pakistan that in Christianity, second marriage is not allowed. And those pastors who are performing this unholy ceremonies, they should be penalized, because the scripture says we are following the New Testament, and Jesus said, one husband till death, one wife till death. And if the husband or the wife is found in adultery, then you ought to leave the person, leave the wife or leave the husband, and live a separate life alone, and do not marry till your husband or your wife dies, and then you can marry. So these are the laws. These are the laws laid by God. And if we do not stick to these laws, then God is against us, because God is a God of obedience. One disobedience in the Garden of Eden, and he drove us out, and he came to forgive. But then does that mean that we continue to disobey him? Grace is there. Jesus died on the cross. He saved us. Yes. What did he save? He saved our soul. He didn't save the body. He saved the soul who's inside. So you will pay the penalty in the body if you are disobeying. And what is disobedience? Disobedience is not following the 12 commandments. Now, you know there are 12 commandments. The 10 that were given to Moses, written by the finger of God, and 2 of the New Testament. The 2 commandments that I often talk about, and we took these 2 commandments along with the 10 commandments to Rome in 23. The 11th commandment, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and with all thy soul. And the 12th commandment, thou shalt love thy neighbor as thyself. And following this, what does this say? On these 2 commandments, yani 11th or 12th commandment, hang all the prophets and the law. Imagine. Just 2 commandments is holding the entire Old Testament. Entire Old Testament is in two commandments. That means you and I are not supposed to perform the 613 laws that were given to Jews because of their disobedience again and again and again. And now grace is upon us. But grace should not give you the leeway to go behind the cross and sin. If you go behind the cross and sin, which many pastors are doing, then God is going to pay them soon. They started paying already. I've started receiving reports of pastors who are sinning in the body, and they are receiving their penalties. So the word of God first stands for the leader. The pastors are the leaders. They're the shepherds. If they are leading a sinful life, and every week they come and they talk about the word, and they're delivering the word with beautiful messages from the mouth, not from the heart, because they are sinning. And I'm not talking about just adultery or having affairs. I'm talking about other sins. And one of the other sins which God hates and hates and hates is pride. There are many pastors who are so proud that मुझसे अच्छा कलाम तो कोई दे ही नहीं सकता. 2 पास्टर कहीं साथ बैठ नहीं सकते. अगर आपने किसी एक पास्टर को बुलाया है और दूसरे को बुला लिया कि नहीं जी आप दुआ कर लें, आप कलाम नहीं पेश करना, तो कहते सॉरी मैं नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकते? मैं कलाम जो नहीं दे रहा. तो आप दुआ नहीं कर सकते? नहीं, मैं दुआ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो कलाम ही पेश करता हूं. तो खुदा ने क्या कहा? My house shall be a house of prayer. अगर आप प्रेयर नहीं कर सकते तो कलाम पेश करने का क्या फायदा? There's no use if you cannot pray. A preacher needs to be a prayer warrior. And if he's not a prayer warrior, if she is not a prayer warrior, then his preaching is of no use. So may God bless you with this word, that we are supposed to understand each other. Understand who got angry. Why did that person get angry? Go to the word and see, was that anger justified? Was that anger justified? Patiently think,
Was that anger justified? Judge yourself in line with the word. Talk to God and say, Father, was I right in getting angry? Or was I not right? And the Holy Spirit will tell you, because the Holy Spirit is the Spirit of truth. The Holy Spirit does not lie, does not lie. And if there is sometimes an argument between two people who have Holy Spirit, then it's better to part ways, because this is what happened between Paul and Peter in Acts. If you read, I will send you the reference. They were arguing. One wanted to go, one wanted to take another disciple, and Paul didn't want him to go. He didn't want to take, I think it was Mark. He didn't want to take him. And they had an argument. And what happened? They said, okay, fine, let us part our ways. You go in that direction and I will go in this direction. So what happened? Ultimately, the gospel was preached. The gospel was preached because God uses people to go to different places. We are different human beings with different mindsets. We can think of, oh, it's better to preach in Pakistan. And somebody would say, no, it's better to preach in India. Am I right or is that person right? No, both are right. So it's better that you part ways. You do your job, I do my job. And glorify God. So let's continue to reflect on our own self. Let this Proverbs chapter, let this book of Proverbs give an insight to you, and I will go through it very slowly, because this is the backbone of Christianity. Because we don't know how to judge, and we judge unrighteously. And we can judge in light of the scripture. And this is what I'm going to show you, because you know what? It is written that we will be judging angels. So if you don't know how to judge, how will you judge angels? So you need to know, and we will learn this through the book of Proverbs. May God bless you with this word. We will meet again tomorrow with another verse, with another declaration, and the first chapter of Proverbs, I will leave it till Monday. You have, all four of you have time. Please, I request you, read the first chapter. Or at least if you don't have time, read the first 7 verses. Let the word come inside you and you can be the righteous judge. You know, Solomon judged and he made pacts, but his manner was not correct, because he gained popularity, he gained wealth, he gained a favor of nations, but at the expense of what? At the expense of dishonoring God by having relations with 1,000 women. And God never wanted that. But did God stop him? God didn't stop him, and neither will he stop you, neither can he stop me. Why? Because he's given us the will to choose. I choose. And then what happens? It is my responsibility, my doing. So everyone is paid according to their acts and according to their word of the mouth and according to their. Make sure that you're not sinning in your heart, because this sin is a dangerous sin. We can sin in the mouth, गुस्से में बोल दिया, sorry, दिल नहीं था. लेकिन of course, that also has boundaries. If you continue to abuse and, you are very, very nasty, that is not called for. A believer should never have abuse on his or her tongue. So till tomorrow is Sabbath, and we will be raising a hallelujah from Lahore. And thank you so much, Shaky, for wonderful praise and worship. God has blessed you with a beautiful heart. And I will give that credit to your mother, who has a beautiful heart, who has raised 2 wonderful sons, and who have wonderful wives and now have children. God bless you, your entire family. You are blessed indeed. Continue to praise him, to glorify his name. Till tomorrow. Bye-bye. And yes, of course, nobody reminded me in all this. Let's close with the Lord's Prayer. Whoever wishes to close. Marina, yes, go on. खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ कर जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने देना बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। Amen. Amen. God bless you. Shalom. May the peace that is beyond understanding stay in your heart till the coming of Jesus. And you are able to give peace to all who are around you. God bless you. बाय। Bye.